Subharti is the best. Subharti is the best. Subharti is the best. Swati is the best. Subharti is the best. Subharti is the best. Subharti is the best. Subharti is best. Love you, Subharti. Jai Hind and welcome to one and all. Our today's webinar's topic is strategies for time and stress management during examination. I, Dr. Archana Agrawal, have the proud privilege of introducing our today's speakers. Our speakers are internal speakers working at Swami Vivekanand Subharti University only. Our first speaker is Dr. Nisha Singh. She has done her MBA and PhD in HR. At present, she is working as an assistant professor in the Faculty of Management and Commerce at Swami Vivekanand Subharti University. She will give you a brief introduction to the word stress. Welcome, Dr. Nisha. Thank you, ma'am, for giving me this opportunity. First of all, I would say Jai Hind to all, Honorable Vice Chancellor, sir, and Honorable CEO, madam, all the professors, and my dear student. I, Dr. Nisha Singh, is here to introduce the topic stress. First of all, I must say, I just want to let you know that stress is everywhere, wherever we are, whatever we are doing. But the strategy or the thing we should learn is that we should manage the stress, but not let stress to manage us. So stress is the body's automatic response to any physical or mental demand placed on it. Basically, it is a phenomena arising from a comparison between the demand on the person and his or her ability to cope up with. Basically, if there is an imbalance or disbalance between the task given to anybody and his or her ability to cope up it with is get disbalanced, then there is a stress. But it doesn't mean that stress is always a negative thing. Stress can be positive also, and stress can be negative also. The positive stress is called as eustress. Eustress is the stress which comes out of the tension of performing the task that we have taken as a challenge, or we want to do the task at its perfect level. Then that type of stress is called as eustress, and eustress serves to be the catalyst for enhancing the productivity, performance, and efficiency of any individual. So a moderate level of stress may actually improve the performance and efficiency. But the negative stress is distress. When we take the things in the pessimistic way, we perceive the things in the negative way, and we don't take the positive outcomes from there, and we feel it as we won't be able to do it. A great amount of or quantity of disbalance occurs due to that task. It is called as the distress or the negative stress. But the too little stress may also result in the boredom. So a moderate level of stress is always productive for a person. A high level of stress may cause the unproductivity, and too little stress may result in the boredom. So we should maintain the level that there should be a moderate level of stress in life to enhance the productivity, but there should not be the too much of stress which can create a fatigue or tiredness in one's life. First of all, for overcoming the stress, we should identify the stresses. Stresses can be situation, activities, and relationships that causes trauma to one's physical, emotional, or physical self. Stresses can be our school, our workplace, family, relationships, legal, finances, health, illness, environment, and living situations. Negative effect of stress can be the physical as well as emotional. Physical can be determined as weight gain or loss, unexpected hair loss, heart palpitations, high blood pressure. And emotional effects of stress can be mood swings, anxiety, can lead to depression, can also lead to unhealthy coping strategies, that is alcohol, drugs, etc. We should learn how to manage the stress, because when we are stressed, if we are stressed, we won't be able to give our best to the work. And if we won't able to give the best to our work, then we won't be able to manage the task or the responsibilities. So managing the stress strategies can be
body relaxation exercises, that is breathing techniques, guiding imageries, physical exercises, that is yoga, workout routine, meditation, counseling, talk therapy, and life coaching. Other helpful tips to get rid of stress can be changing perceptions and expectation. The very big deal in stress is that we expect a lot from us. We should never take the task which we cannot do it perfectly. We should always change, and we should also change our perception. If our perception is positive, then we'll take the things positively and we won't face the stress. And we should not increase so much of our expectation that we cannot handle it by taking the responsibilities. We should break our jobs tasks into the manageable parts and do it step by step to manage the time also. We should set the reasonable, realistic goals. The biggest problem with a human being is that sometimes they are very airy. They think that they can do whatever they like, but we should always calculate the available resources, the available capacity, the available stamina of ourselves, and by measuring our stamina, capacity, and capability, we should set our goals so that we should not suffer the fear of failure or anything. We should be very confident. We will always be confident that we can reach that goal which we have set. We should avoid procrastination. We should always avoid the delays in the task. We should not leave the task to be done for the 11th hour. We should be planned enough to complete our task before the time to avoid the stress. We should set the boundaries. We cannot be limitless. We have the limits. We have only 24 hours in a day, and accordingly we should set the boundaries so that we will be managed and we will not be imbalanced. We should not compromise our values and beliefs for the task, for the ambition. Always we should schedule for the me time. Even though we are so much occupied with the task, we are so much occupied with our office responsibilities, but in total 24 hours, 20 to 30 minutes for yourself is always mandatory to get rid of the stress. Strategies for managing the stress, or just applying those tips which we have discussed right now. First is time management. We should always calculate the time before taking the task, before taking the responsibility, that how much time is required to accomplish the task and how much we have been given. Second, we should always be positive thinker. If we'll take the things optimistically, we will take the positive side of anything, and we will not suffer from the distress. We'll be eustress if we'll be suffered with also. And then self-motivation is very mandatory, that we should always think that we can always cope up with the challenges and we can do whatever we like to do. Benefits of stress management: our physical health get better, we are emotionally stabilized, we have ability to improve ourselves. If we can manage our stress, we can improve ourselves. The basic keyword in the introduction of stress, I want to say that if there is balance between our capabilities and our task, then we will be stress-free. So we should always balance our life. And this is the strategy, this is the best tip to balance the stress. Thank you all. Thanks, Dr. Nisha, for such a nice, brief introduction of stress. Our next speaker is Dr. Apurva Gautam. She has done her MPT in sports and working as an assistant professor in the Faculty of Physiotherapy. She will tell you about something about stress management before and during an examination. Dr. Apurva, most welcome. Jai Hind everyone, and thank you ma'am for this beautiful introduction. We'll quickly skip to the part how to manage your stress before and during your examinations. So we are already through emotional pressure.
Physical pressure is we overexert ourselves, that is studying for more than 5 or 6 hours in one stretch. So ideally, we must divide much pressure on our body that it cannot sustain. So, and emotional pressure is that we do not get overburdened or overwhelmed, that we are not prepared or pressurizing ourselves for the same. Then external and internal pressure. External pressure is something that is imparted by our external environment, which mainly comprises of our parents, like parents pressure or pressure by friends. So it could be peer pressure. And other is internal pressure. It is more or so similar to emotional pressure. Then third is lack of preparation. That is obviously it is most common in those students that they are not prepared beforehand. They leave everything for the last minute. So as ma'am just said, we should not leave things for the 11th hour. So we must be prepared accordingly. Then fourth reason is lifestyle. So the students today, instead of going more into outdoor activities, instead of their outdoor participation, they are more focused in indoor participations and focus more on mobile usage or video gaming or playing on PlayStations. Then last is poor studying habits. That is maybe, for example, studying in dim lights is one of the causative factors of examination stress. Then next, yes. So what is the difference between stress and challenge? So there's quite a borderline difference between the both. Unlike stress, challenge is important for healthy and productive work. Often confused, challenge energizes people psychologically and physically both. It motivates people to learn new skills and master their jobs. And lastly, when a challenge is achieved, the people who are doing the challenge, they feel relaxed, satisfied, and they feel achieved. So what is the concern that you need to be worried about that I have stress? So the stress is the ultimate risk factor of almost all ailments, be it physical or be it psychological. Then major cause of 50% of all diseases is stress, of course. There is a dramatic effect on your immune system. Some studies have correlated that in high levels of stress is directly correlated with a poor immune system. Then yes, so why should you be concerned continuing that stress is the cause of two major illnesses, that is heart diseases and also cancer. But you need not worry. The good news is that life doesn't have to be stressful at all. It depends on your perspective, your thinking. Just as having a high level of stress leads to negative health and life consequences, managing and reducing stress brings some important, or rather, I would say, many important health benefits. So I'll list down just these are a few benefits to be mentioned, although there are n number of benefits that can be enlisted. So managing stress will help improve your immune system functioning also, prevent illnesses, basically the systemic illnesses like the common cold or physical complaints such as back pains. Managing your stress also increase your energy levels. Also, it helps you to be more productive and hence you can spend more quality time with your friends and family. Some other benefits are improving quality of your sleep. If you manage your stress, it will improve your sleep quality, it will improve your digestion, it will keep you calm and allows you to be on your game. Now, what are some of the barriers of managing your stress? So these are some of the excuses that we give to ourselves, or we can say these are the reasons how we console ourselves. Like people who are stressed just cannot cope with reality. Or if I just make it through these few weeks, I'll be okay. The next reason or the next excuse I would say is I'm so stressed, I don't even know where to start. That is, they don't have the proper guidance how to manage their stress. So it is also one of the barriers. Dealing with my stress would just be too expensive because what currently people think is spending on their physical treatments, for example, any heart surgery or any back surgery, they are ready to expend their money on that. But when it comes to counseling or maybe consulting a psychiatrist, so that they find expensive. So this is one of the excuses. So, and lastly is, again, these are only just some of the examples.
Lastly is I'm always stressed. It hasn't made a difference so far. So what they have done is these people have dealt with their reality and they have accepted that they are stressed and they are not at all ready to manage themselves. So these are some of the excuses to stress management, to stress. Now, these are the 5 stages of change. So I'll be going one by one. The stage 1 is the person states, no, I'm not dealing right now. Like they are not ready to deal with their stress right now. That is the stage 1. Stage 2. Now, this stage is in the order of severity. As we go to stage 5, the patient or that person has completely recovered of the stress. So the stage 1 is the most severe stage, that the patient is not even aware that they are severely stressed and that needs to be managed. So stage 2 is, yes, they state that I'm seriously considering stress management, so they are giving perception to this. Stage 3 is they are ready to start dealing with stress. Stage 4 is they're managing, that is they're at the process of managing their stress. And lastly, stage 5 is I've been able to cope with my stress for a long time. That is, stress is something unavoidable. Everybody goes through stress. But what makes the difference is how you are able to cope with your stress. So stage 5 is they are able to cope with their stress. Now, when it comes to students, or I personally follow the Pomodoro technique. So what happens in this technique is you set a timer for 25 minutes. You take a deep study session of 25 minutes. You'll put your mobile phones on airplane mode and switch off all the distractions. For 25 minutes straight, you'll study. Then after 25 minutes, you'll take a break of 4 to 5 minutes. Then again, you repeat this for 4 sets. So at the end, you'll have a 2-hour stretch of studying. So this is the Pomodoro technique, and students must follow this, not just during, but also before their exams. Now, how to deal with examination stress? First is physical activities. Obviously, working out, it could be as simple as walking in your lawn, or something as strenuous as playing a sport. So these all lead to endorphins release in your body, which are your natural relaxants. So next is cleaning your study area. If you study in a clean area, this will help you declutter your mind as well, so you can focus better. The third is setting goals. Set realistic and achievable goals, because if you set unrealistic goals, it will lead to disappointment in yourself. So next is sleep. Have a good sleep quality, because sleep is something very crucial and one of the basic elements you require for a healthy living, right? Then it's lifestyle. Have a good, instead of living a sedentary lifestyle, we should be more towards proactive lifestyle. Then reduce phone usage. Then prioritize your time. Practice deep breathing for relaxation. This is something we can practice not just during exams, but people have several anxiety or panic attacks, depending, it is something subjective. So this is something anybody can practice just before their whatever fear they're about to face. For example, someone has stage fright, so they can practice deep relaxation breathing technique to calm them down. And the last is introspection. This is something students must focus on prior to their examination, like when their examinations are not approaching. At the end of the day, introspect yourself. How productive have you been throughout your day? If you introspect, you'll be able to see how much time you spent in your day quality wise. Okay, role of the teachers in managing stress. So the teachers must not be partial or biased towards their students based on their academic records. Instead, they must ensure all students that they are learning well. Be sensitive to academically weak students, not to miscommunicate with the parents regarding the drawbacks of the students. Teachers must help in planning a timetable for the students so that they can devote their time to the subjects in which they are weaker. Teachers must track their performances, as we do it in our curriculum as well. In Subharti, we have a mentor-mentee session. So we can do that. Open discussions about the goals and achievements of the students.
And last is the psychiatric consultation. This is something which still has a big social stigma in our society, and we need to overcome this. If we can openly admit that we are going to a doctor or maybe a dentist or maybe an eye specialist, then we must be able to admit that yes, I'm also going for a psychiatric consultation. So students must not be in any way be ashamed of it. And these are the things which are very helpful for the students as well. Now, general tips for managing stress are regular exercise and a healthy lifestyle. Healthy eating habits, have a good nutritious diet, have green leafy vegetables and fresh fruits, seasonal fruits to eat. Also, take one thing at a time. If suppose you are studying one subject, if you are studying maybe English, then don't think about what you will be studying in maths or science. Whatever you are doing, just do it in the moment. Don't think about the future. Go easy with failures. If so, what if you have failed? There's always a second chance. So don't be disheartened whenever you face a failure or any criticism, be it as simple as a class test. So next is be realistic in what you can versus what you want to accomplish. If you are setting goals, for example, you have exams coming up in about a week, you have 7 subjects to study. Although you want to cover one subject each day, but that is something you cannot practically accomplish. So, right? So set realistic goals according to you. Lastly, shed the Superman or Superwoman urge. That is, nobody is perfect. Whatever it is, you can thrive for perfection, but actually nobody can be perfect. So we must try whatever we are doing. We are giving our 100% in that. So, okay, the lastly key takeaways from my presentation are: change is a process. You cannot expect that if you are today you have started managing your stress, tomorrow itself you'll get the results. It is a process and you need to bear with it. You need not be disheartened or give up. Study daily. This is something we have been taught since childhood, but least of us follow this. So we need to study daily, follow a routine, exercise regular and eat healthy. Talk to your friends and family, whoever make you comfortable with, whoever you can share whatever difficulties you are facing. Read self-help books or watch or listen to some good podcasts so they can help you in self-development. Discuss with your teachers or your parents whatever problems you are facing. Try the Pomodoro technique, of course. Take quality sleep before the night of exam. This is something that least of the students follow. The night before the exam is very crucial because our brain has been exhausted of the overburden. So give it some rest, let it rest for 7-8 hours, and then go and take the exam. And lastly, if you think none of these stress management techniques are working, consult a psychologist or a psychiatrist. Don't ever hesitate talking to your parents or your teachers regarding the same. Thank you. Jai Hind. Thanks, Dr. Apurva, for giving us such a nice piece of valuable information about the management of stress during and before the examination. I think if the students follow this, they must be benefited with this. After routine management of exam stress, we would like to move towards the other measures of stress management, just like yoga, holistic management. For this, I would like to invite Dr. Purnima Bansal. She has done her BNYS with a gold medal and MD in clinical naturopathy also with a gold medal. And she is at present working in the faculty of physiotherapy as an assistant professor in Swami Vivekanand Subharti University. Now over to Dr. Purnima. Jai Hind.
As today, I'm here to tell how yogic perspectives helps in reducing the stress before and after examination. So when the student is stressed out, there will be increase in the stress hormone and increase in the sympathetic activity. So what the person should do, what the student should do, the student should perform the yogasana and pranayama on a daily basis, which will lead to the reduction of sympathetic activity and leads to the mental tranquility and leads to the increase in the concentration and memory. The most important thing in yoga is yoga nidra. अगर मन को शांत रखना है तो योग निद्रा करना बहुत आवश्यक है. योग निद्रा करने से मन में शांति आती है और हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिससे बॉडी रिलैक्स हो जाती है. योग निद्रा के द्वारा आसानी से आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं और एग्जाम में आराम से आप परफॉर्म कर सकते हैं. योग निद्रा क्या है? अभी क्वेश्चन है योग निद्रा कैसे कर सकते हैं. It is very simple, it's not complicated. What you have to do, you have to just lie down in supine position. आप supine position में लेट जाएं, सीधे लेट जाएं कमर के बल. उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको बॉडी को रिलैक्स करना है. The first thing is relaxation. The full body is relaxed. Then what you will do, you will give a positive affirmation, sankalpa. So this is the next step, is a sankalpa. So you have to take positive thoughts, positive goal, how you will be dealing with the exam. So those positive thoughts you will be keeping in your mind. So next is the rotation of consciousness. So you have to rotate your consciousness to different body parts that you have to feel it. Then next is the respiration awareness. You have to feel the respiratory movements, you have to relax, and you have to feel how your breathing is happening. So when it is done, the next is manifestation of opposites. So you have to feel some feelings like hot and cold. So these feelings will help in reducing the stress level. So next comes the creative visualization. So you have to visualize some creative things like bird is going. So you have to make your mind to that level. So it will be helping reducing the stress. Then next comes the affirmation. So the second step, we have done the affirmation, that is sankalpa. Again, you have to read, you have to mentally just repeat the positive thoughts, positivity in the mind. Then you will be relaxed enough. Then you have to come back from the position and you have to be aware of your body. So this is called as yoga nidra. So if it is practiced, it will give very positive impact for the removal of the stress. So what is the effect of this? It will reduce the parasympathetic activity. So another issue comes because of the stress during the exam is the diarrhea. So many students will complain, we have diarrhea, we are going again for washroom. So that butterfly feeling is there. So it is just nothing, it's just a gut-brain axis. So what is happening? Well, because of this gut-brain axis, as gut-brain axis is nothing, it's just a physical and chemical connection between the gut and the brain. So gut contains the 500 millions of neurons, which are connected through nerves in nervous system. So the biggest nerve is the vagus nerve, जो gut और brain को connect करती है. So what is the best yoga for reducing this stress is doing Omkara meditation. Omkara meditation or Om chanting is very simple method and you can get rid from stress. So what you have to do, you have to sit simply in any meditative posture, either Sukhasana, Vajrasana. You have to close your eyes, and what you have to do, you have to chant Omkara. So it boosts the synthesis of important hormones, protein, enzymes, and chemicals, which relieves stress. So, and so many researches has been done. Recently, in 2021, the researches has been done for reducing the stress level for exam going students in MBBS student it is done, and for the BSc nursing also it is been done. So they concluded that there was a reduction in the stress level just after doing the Omkara meditation. So Omkara makes the body energetic and refreshed.
So अब स्टूडेंट्स पूछेंगे कि अगर सिर्फ हम ओमकारा मेडिटेशन करते हैं ये कैसे हो सकता है, सिर्फ ओमकारा मेडिटेशन करने से कैसे हमारी स्ट्रेस लेवल दूर हो सकता है. फॉर दैट आई विल टेल द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओमकारा मेडिटेशन. सो जब हम ओमकारा चैंटिंग करते हैं तो वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं हमारे ईयर्स में, सो विच विल ट्रांसमिट थ्रू द ऑरिकल ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व एंड स्टिमुलेट इट. सो जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं. सो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उससे एक्टिवेट हो जाता है, तो सारा स्ट्रेस और एंजाइटी सब खत्म हो जाता है. सो ये तो हमारा इंस्टेंट सॉल्यूशन हो गया. जैसे इंस्टेंट रेसिपी होती है, ये भी एक इंस्टेंट सॉल्यूशन है कि हम अगर ओम चैंटिंग करते हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल सब गायब हो जाएगा. तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है. whatever I am telling, it is scientifically proved. Research has been done. So अगर आप उस प्रैक्टिस करेंगे, you can feel it. So many people has experienced and experimented that the things what I'm telling is experimental based and the experience based also. So if you will do, the stress will definitely go. But there is need for doing the regular basis also. So if you will perform the Surya Namaskara, sun salutation, breathing exercises, Brahmari pranayama, Nadi Shuddhi pranayama on the daily basis, so the nervous system will be balanced. अगर नर्वस सिस्टम बैलेंस है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम बैलेंस है, तो वो प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी. बट अब बोलते हैं कि हम मैनेजमेंट तो निकाल रहे हैं, बट द थिंग इज वी हैव टू स्टडी ऑल्सो. तैयारी भी जरूरी है. सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सोचें कि मैनेजमेंट करना है, हमें ये खाना है, हमें ऐसे मैनेज करना है, हम कुछ दवाई ले लें. नहीं, आपको उसको पहले से तैयार भी रखना है सब्जेक्ट को. सो preparation is also important. Doing yoga on daily basis is important. Doing yoga nidra, if you are doing the yoga nidra under some supervision, that is the best thing. It will give you the positivity and the nervous system will be balanced. Now at last I'll tell, don't stress, do your best and forget the rest. So with this I'll end. Jai Hind. Thanks, Dr. Purnima, for such a wonderful and knowledgeable presentation. अंत में मैं हमारे आज के अंतिम व अति विशेष वक्ता, बहुमुखी प्रतिभा के धनी डॉक्टर राहुल बंसल को आमंत्रित करती हूँ. Dr. Rahul Bansal, professor and head, is a name in community medicine. He has done his MBBS, MD from LLRM Medical College, Meerut. He has having a rich experience of teaching of more than 30 years. He has numerous publications in national and international journals. He has also been awarded with the Best Teacher Award by HIMS Dehradun. He strongly believes in principles of holistic health on bio-psycho-spiritual model of health. Today, he will be talking on holistic approach to the stress management. Welcome, sir. Now the floor is for you. सर माइक को ओपन कर अनम्यूट कीजिए सर. हेलो, थैंक यू डॉक्टर अर्चना. थैंक यू फॉर ऑर्गेनाइजिंग सो वेल. आपने स्पीकर्स बहुत अच्छे चुने हैं और तीनों ने ही बहुत अच्छा बोला है. मैं तीनों को ही बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपको भी कि आपने इतना अच्छा ये वेल ऑर्गेनाइज्ड ये किया है. मेरा काम तो आइसिंग ऑन द केक है. सब कुछ जो कहना जाना था सब कहा जा चुका है. But I am going to give the icing on the cake. Now, whatever the three speakers have said can be summed up with this diagram.
Madam, can this diagram be shown? Just see whether this diagram is visible. ये स्क्रीन पर दिख रहा है मैडम? Is it visible? सर दिख रहा है सर. It is visible. हाँ सर दिख रहा है. दिख रहा है ना? एक सीसो दिख रहा है ना आपको? Yes sir. ये सीसो में एक तरफ है फियर, एक तरफ है फोकस. एग्जाम में बहुत क्लियर नहीं है सर. हाँ कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. एक सीसो है, एग्जाम आई हैव कंपेयर्ड टू ए सीसो. एक तरफ सीसो में बैठा हुआ है फियर. सीसो समझते हैं, ऊपर नीचे जो झूला होता है. एक तरफ बैठा हुआ है फियर, एक तरफ बैठा हुआ है फोकस. फियर और फोकस में बैलेंस रहेगा तो स्टूडेंट सक्सेसफुल होगा. आई एम जस्ट summing up the things which they have said and then I'll add in the end something which is not been said. फियर का जो फैक्टर्स हैं जो बढ़ाते हैं, फियर आपको फियर ऑफ फेलियर होता है. ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और मेरे इतने नंबर नहीं आए तो क्या होगा, मम्मी ये बोलेंगी, पापा ये बोलेंगे, मेरा एडमिशन नहीं होगा, मेरा ये नहीं होगा, मेरा वो नहीं होगा. दीज आर द फियर्स, द फियर ऑफ द अननोन, जिसको बहुत अच्छे से एड्रेस किया है तीनों ने. दैट फियर एक थोड़ा लेवल होगा तो इट विल मोटिवेट टू डू बेटर, एज हैज बीन सेड बाय अर्लियर स्पीकर्स. व्हाट इफ इट इज मोर देन दैट, इफ इट इज predominant thought in your mind, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगी, फेल हो जाऊंगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, that will not allow you to focus and fear will take over. And as Dr. Purnima has said, वो सारा pituitary axis और hypothalamus axis और सारी चीजें वो aggravate हो जाएंगी, sympathetic overdrive हो जाएगा. दूसरी तरफ है focus is the key. जितने ध्यान से हम पढ़ेंगे, जितने ध्यान से हम अभी जो कर रहे हैं उस पर फोकस करेंगे, उतना ही हमें याद रहेगा. सो फोकस एंड फियर, ये दोनों वर्ड्स का बैलेंस है सारा. नाउ फोकस किस किस से बढ़ सकता है? एज पर व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस एंड रेड, द फोकस कैन बी इंप्रूव्ड बाय, वन इज फूड, जिसको पहले भी बोला सात्विक आहार. मैं इसको थोड़ा योगिक टर्म यूज करूंगा. सात्विक भोजन जितना हम लेंगे, यानी कि जितना फल, सब्जियां एंड ड्राई फ्रूट्स एंड होल ग्रेन्स, दलिया, these things, there is a research which proves that the mind and the food are, पहले हम लोग नहीं मानते थे, मॉडर्न वाले अब मानने लगे हैं कि फूड एंड माइंड आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. एक ब्रांच आ गई है न्यूट्रिशनल साइकेट्री. आपको जान के आश्चर्य होगा, देयर इज अ न्यू ब्रांच इज न्यूट्रिशनल साइकेट्री. सो एंड वी हैव टू, हम तो कहते ही थे पहले से, जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन और तन. पहले मन बोला हमने, तो मन को यानी कि फोकस को अगर ठीक रखना है, वी हैव टू अवॉइड फास्ट फूड्स. फास्ट फूड्स को अवॉइड करना है, और जो नेचुरल फूड्स हैं, हेल्दी फूड्स हैं. देयर आर सम सुपर फूड्स जो ब्रेन फूड्स हैं, उसमें कुछ सुपर फूड्स हैं. जैसे मैं कहूंगा बादाम इज ए सुपर फूड. देन एक और सुपर फूड है आपका अखरोट. देन देयर इज ए सुपर फूड द मट्ठा, और व्हाट वी सेड बटर मिल्क, and dahi. I hope many of you will remember that during exams our mothers used to give us, वो दही खिला के भेजती थी हमको. अर्चना मैडम को ध्यान होगा और उनको, कि दही खिलाते थे हम लोग. Am I right? मैडम, are you there? Yes sir, बिल्कुल ध्यान है सर. हाँ, दही खिलाते थे ना पहले. Yes sir. उसका वैज्ञानिक आधार मिल गया है. दही या मट्ठा लेने से हमारे पेट में जो करोड़ों बैक्टीरिया हैं, जिसको माइक्रोबायोम कहते हैं, जी सर. they become more healthy, more balanced,
they become more, positive, you can say. And microbiome is directly related to our focus, our mental activity. तो हमारी जो दादियां थी, माताएं थी, वो बहुत सुपर साइंटिस्ट थी, हम लोग उनको नहीं समझ पाए, तो वो दही जो खिलाती थी. सो दीज टाइप ऑफ थिंग्स. ऐसे ही फ्रूट्स और वेजिटेबल जो हैं, दे आर प्रीबायोटिक्स. दही मट्ठा है प्रोबायोटिक, यानी उस माइक्रोबायोम को, पेट के गट फ्लोरा को वो जो है हेल्दी बनाते हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, इनको प्रीबायोटिक कहा. और जो दही मट्ठा इत्यादि चीजें हैं वो प्रोबायोटिक्स हैं. दोनों ही हमारे पेट के फ्लोरा को, गट फ्लोरा को एनरिच करते हैं, हेल्दी बनाते हैं. पेट जितना, आपको सुन के अजीब लगेगा कई स्टूडेंट्स को, आप लोग फैकल्टी को, पेट जितना शांत रहेगा उतना माइंड भी शांत रहेगा. ये हमारे महापुरुषों ने हजारों साल पहले ढूंढ लिया था. वो गट फ्लोरा की बात नहीं जानते थे उस रूप में, बट अब आ गया है. द माइक्रोबायोम ऑल्सो डिटर्मिन्स योर मेंटल एक्टिविटी. तो इसलिए ये भोजन, चाहे आप प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक का हो, चाहे सात्विक भोजन का हो, बात एक ही है. एक और वर्ड ऑफ कॉशन, ड्राई फ्रूट्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा एंड माय ओन ऑब्जर्वेशन, उसको भिगो के खाना चाहिए. रात में आप, यंग बच्चे हैं, 10 बादाम भिगो लें, 1 या 2 अखरोट भिगो लें, और सुबह उसको चबा चबा के खाएं, तो वो ज्यादा जल्दी डाइजेस्ट होगा बजाय भैंस पर ड्राई लेने के. अब वैसे भी अब समर्स आ रहे हैं, आ चुके हैं. आप अगर अखरोट लोगे, बादाम लोगे बिना भिगोए, वो आपको थोड़ा सा एसिडिटी कर सकता है, ड्राइनेस कर सकता है. तो पहला चीज फोकस बढ़ाने का, मेंटल फैकल्टीज को एनहांस करने का है सात्विक भोजन. उसी तरह दूसरा है एक शॉर्ट बस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो पहले स्पीकर्स ने भी बोला. शॉर्ट बस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विच कुड बी, आपने थोड़ा सा 5 मिनट का, अगर आपके घर में लॉन है, जगह है, 5 मिनट आपने 2 घंटे पढ़ने के बाद 5 मिनट आपने एक छोटा सा जॉगिंग कर लिया. या बाहर नहीं जाना है तो आपने 3-4 सूर्य नमस्कार कर लिए, जो पूर्णिमा बता रही थी. थोड़ा सा अगर पसीना आ जाए तो कहना क्या है. तो क्या होता है, रिसर्च बताती है, व्हेन वी डू ए शॉर्ट बस्ट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ब्रेन का सर्कुलेशन बढ़ जाता है. देयर इज 8 to 10% इंक्रीज ब्लड फ्लो इन आवर ब्रेन, इन आवर ग्रे मैटर. तो उससे थोड़ा सा हमारा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है. इट्स लाइक चेंजिंग गियर. सो फिजिकल एक्टिविटी, देन यू कैन इंक्रीज योर कंसंट्रेशन वेरी वेल बाय, जैसा पूर्णिमा उन्होंने बताया. मैं स्पेसिफिक बताता हूं. लोगों ने कहा प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूं जो मेरा एक्सपीरियंस है. अनुलोम विलोम, 5 rounds of अनुलोम विलोम every 1 hour of study will break your anxiety cycle, will increase the activity of left brain as well as right brain. क्योंकि योगिक साइंस में लेफ्ट नॉस्ट्रिल जब हम ब्रीथ करते हैं तो राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है, और राइट से करते हैं तो लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है. सो व्हेन यू आर डूइंग अनुलोम विलोम, लेफ्ट राइट, actually you are relaxing, you are relaxing the whole brain, you are reorganizing the whole brain. It's like rebooting the computer. कंप्यूटर रिबूट करते हैं अपन लोग, ऐसा ही अनुलोम विलोम से रिबूट होता है. उसके अलावा एक और चीज जो उन्होंने भी बोली है, मैं भी इसको रेफरेंस करता हूं, स्लीप, एडिक्वेट स्लीप. बच्चे क्या करते हैं एग्जाम में, वो रात भर जागते हैं, कॉफी वगैरह लेते हैं, सोचते हैं कैफीन पी के हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, बट दैट इज वेरी डेंजरस. कैफीन ने जो हाइपर स्टिमुलेट किया, आपको ब्रेन को एक्टिवेट किया, नींद कम हुई, इट कैन रिजल्ट इन मेमोरी लॉस द नेक्स्ट डे. पता लगा एग्जाम में कुछ आ ही नहीं रहा है दिमाग. मेमोरी को क्रिस्टलाइज करने के लिए नींद जरूरी है. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स and anybody else who is listening, the greatest inventor Thomas Alva Edison and others like him, whenever they have to get stuck in an invention, कोई इन्वेंशन करते करते नहीं हो रहा, ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, इलेक्ट्रिक बल्ब बनाते बनाते खूब फेल हो रहे हैं, बार फेल हो रहे हैं, what they used to do, 2 तरीके थे. या तो वो लोग मेडिटेशन में चले जाते थे, that is one way, but everybody cannot meditate,
और दे यूज्ड टू गो फॉर ए स्मॉल पावर नैप। पावर नैप ले लेते थे, एक 15 मिनट का, आधे घंटे का, थोड़ा सा सो गए। अब सवाल ये है कि साहब कहोगे जी पावर नैप करेंगे सोते रह जाएंगे, तो आपके पास मोबाइल है, आपके पास सारे डिवाइसेस हैं। अगर आप घर में रहते हैं तो मम्मी पापा से बोल सकते हैं, हॉस्टल में रहते हैं फ्रेंड से बोल, भाई मुझे आधे घंटे से ज्यादा मत सोने देना। So that also reboots the brain. And even otherwise, research shows that those who do not take adequate sleep, their memory goes down. तो ये उल्टा है, आप इसलिए जाग रहे हो कि आपको ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा याद रहे, बट आप इतना कम सो रहे हो तो पता लगा वो जो पढ़ रहे हो याद ही नहीं हो रहा, अगले दिन वो आएगा नहीं, आपके अवेयरनेस में नहीं आएगा। सो यू हैव टू बैलेंस। इसीलिए भगवान ने जो गीता में 6 का 17वां श्लोक है, इफ आई एम राइट द श्लोक तो मुझे याद है, बट उसका एग्जैक्ट 6/17 ही है शायद। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसी कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो युक्त आहार विहार, यानी कि एप्रोप्रिएट फूड, एप्रोप्रिएट आहार मतलब आंख से कान से, युक्त आहार विहार, अदर एक्टिविटीज, युक्त चेष्टसी कर्मसु, कर्मों में युक्त चेष्टा, बहुत एक्सेस भी नहीं करना है, इतना नहीं पढ़ लेना जैसे पहले भक्त से कहा, इतना मैं तो टॉप, मैं तो ये कर लूंगा, मैं तो पहली बार में IAS टॉप कर लूंगा, और पढ़े जा रहे हैं, एक्सेस पढ़ेंगे वो रिटेन नहीं होगा, आपकी कैपेसिटी से ज्यादा है। सो युक्त चेष्टसी कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य, प्रॉपर वेकिंग एंड स्लीपिंग। देखिए भगवान ने गीता में कितना बड़े, प्रॉपर स्लीपिंग एंड वेकिंग, ऐसे का ही दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। तो एग्जाम भी तो एक तरह का योग ही है ना, एक शॉर्ट टर्म में वी आर ट्राइंग टू प्रूव आवरसेल्व्स, तो वहां पे भी वो लगता है। तो ये आपके फोकस को बढ़ाएंगे जो मैंने बताया। फियर कैसे कम करें? फियर एक लेवल से ज्यादा तो बहुत खतरनाक हो जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली some of the students even go to the level of committing suicide. सुसाइड भी नहीं करते, पैनिक रिएक्शन हो जाता है। एक मेरी बड़ी अच्छी स्टूडेंट जो है MBBS की, अच्छा कर रही थी बहुत, फाइनल एग्जाम से पहले उसको पता नहीं क्या हुआ, she did not appear in the प्री यूनिवर्सिटी, उस वजह से वो उसमें भी नहीं बैठ पाई यूनिवर्सिटी में, जबकि वो बहुत अच्छा कर रही थी। When the parents came to me, मैंने कहा भाई आप पहले अगर मेरे पास ले आते। बाय द वे एक वेलनेस सेंटर है भारतीय यूनिवर्सिटी में जो 11 से 1 खुलता है, जो कि आपके PNB का जो ATM है या कहीं एडमिशन सेल है, गेट के बिल्कुल बगल में, जो आपके इंजीनियरिंग वगैरह कॉलेज जहां शुरू होते हैं वहां एक बड़ा गेट है, वहां वेलनेस सेंटर का एक बोर्ड लगा है, वहां पर 11 से 1 के बीच एनीबडी कैन वॉक इन, एनी वन ऑफ यू। वहां मेरे डॉक्टर्स होते हैं, वहां पर सारी टीम है हमारे पास क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, हमारे नेचुरोपैथ है, मैं खुद वहां पर मौजूद रहता हूँ ऑन कॉल। तो मेरे जो डॉक्टर्स हैं वो बता देंगे ऐसे एक स्टूडेंट आया है इंजीनियरिंग से या नर्सिंग से या वहां से आर्ट से, वो आपसे मिलना चाहता है, आई विल इमीडिएटली कम इन 5 मिनट्स, एंड अदर स्पेशलिस्ट ऑल्सो। तो 11 से 1 वेलनेस सेंटर का आप याद रखिए, जो आपके लिए कोई स्टिग्मा नहीं है, वहां कोई नहीं देख रहा है, ना वो हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं है, वो तो एक कमरा है छोटा सा, कोई नोट भी नहीं करेगा, आप आइए बात करिए। आज ही मैंने एक बच्ची का काउंसलिंग किया है, परसों भी किया था। सो दिस थिंग्स आर वेरी गुड इन यूनिवर्सिटी कि हमारे पास ऐसी फैसिलिटी है जहां कोई स्टिग्मा नहीं। सो फियर को कैसे कम करें? सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं मेरे हिसाब से प्रेयर इज द काउंटर ऑफ फियर। अगर हम उस भगवान को, खुदा को, अल्लाह को, ईश्वर को, वाहिगुरु को, बुद्धा को, जिस रूप में भी कहें, अगर हम कोई एनर्जी मानते हैं, कोई सत्ता मानते हैं, कोई शक्ति मानते हैं, तो वो शक्ति अभी भी है जब एग्जाम हो रहे हैं, आगे भी रहेगी, पहले भी थी, एंड दैट चेतना, दैट शक्ति इज देयर ड्यूरिंग द एग्जाम ऑल्सो, एंड इट नोज, इट इज अवेयर ऑफ द हार्ड वर्क यू आर डूइंग। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूं, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूं, कोई और समझे या ना समझे। कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते कि मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, कई बार टीचर्स भी नहीं समझ पाते, तो वो तो समझ रहा है।
जो वो शक्ति है, उस पर भरोसा करके जब हम प्रे करते हैं कि प्रभु मैं तो कर रहा हूं मेरे बस की जितना है, मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं कर छोड़ रहा हूं, आप देख लेना। और इसमें बाकी सब धर्म ग्रंथ सभी का मैं सम्मान करता हूं, बाइबल हो, कुरान हो, जो बुद्धिज्म के धर्म ग्रंथ हैं, या अपना जो गुरु ग्रंथ साहब है, वो सब मेरे लिए उतने ही सम्मानित हैं। मगर गीता को मैंने क्योंकि ज्यादा अध्ययन किया है, मैं देखता हूं गीता से अगर जुड़ते हैं तो एंजाइटी अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आगे पूरा श्लोक एकदम से मुझे वर्ड्स ध्यान नहीं है। कर्मण्य, आप अपने ड्यूटी करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब ये नहीं फल नहीं मिलेगा, अरे और ज्यादा मिलेगा और अच्छा मिलेगा। फल पे फोकस मत करो, ड्यूटी पे करो तो याद ज्यादा रहेगा। किताब पे फोकस है और किताब में बिल्कुल डूब गए, किताब ही किताब है, याद रहेगा। हाय अब क्या होगा, इतना रह गया, अरे फेल हो जाऊंगी, अरे ये क्या होगा, डैडी क्या कहेंगे, कहाँ फोकस है। इसीलिए भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तेरा कर्म करने में अधिकार है, फल में नहीं है। और आगे कहते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि तू आलसी बन जा, क्योंकि दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एक्सट्रीम है अरे जो होना है वो होगा, क्या करना है, क्यों मेहनत करनी है, सब लिखा हुआ है यहाँ, ये तो आलसियों का है, उनका तो कुछ होना नहीं। एक एक्सट्रीम ये है मैं हूं जो कुछ कर सकता हूं, मैं ये करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं पहली बार में निकाल लूंगा, मैं जीमैट, मैं पहली बार में। ये दूसरा एक्सट्रीम है, ईगो ड्रिवन। बीच का रखिए, बीच का जो गीता का अप्रोच है, कर्म तो करो, ड्यूटी करो, पढ़ाई करो, शांत होके करो, ऊपर वाले पे विश्वास होके करो, और फल छोड़ दो उस पर। किस पर? जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। आपसे मेरे से पूछ के घूम रही है क्या धरती, या बिल्कुल, या जो आपके प्रेसिडेंट्स हैं या बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे पूछ के चल रही है, जो बाइडेन से पूछ के चल रही धरती, या सृष्टि, या कॉस्मोस? हम पूरी, हमारी अर्थ जो है इस ब्रह्मांड में एक छोटा सा तिनका है, इट्स जस्ट लाइक ए स्पैक ऑफ डस्ट। वी हैव हार्डली एनी एग्जिस्टेंस इन दिस यूनिवर्स, आवर अर्थ, और हम तो कुछ भी नहीं है उसमें। देन स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन, पृथ्वी घूम रही है, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज चल रही हैं। कहां से चल रही हैं? हम थोड़ी चला रहे हैं। तो हमारे एग्जाम के पहले भी चल रही थी, आगे भी चलेगी। एग्जाम को डू और डाई मत बनाइए, एग्जाम को लास्ट थिंग इन द लाइफ मत बनाइए। इससे पहले भी बहुत कुछ था, इससे बाद में भी बहुत कुछ। अर्जुन को जब ये हो गया था, गीता की बात कर रहा हूं, जब करे ये राजा लोग मारे जाएंगे, इसमें तो मेरे वो हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे गुरु हैं, मैं कैसे लड़ूं, और ये मर जाएंगे तो क्या होगा, फलाना ढिमका। उसको एक्यूट स्ट्रेस हो गया, जैसे आप लोगों को, स्टूडेंट्स को हो जाता है, हमें भी होता था कभी। तो क्या कहा भगवान ने? ऐसा नहीं है, ये राजा लोग पहले नहीं थे और आगे भी नहीं होंगे। ऐसा एक श्लोक है इसमें, ये पहले भी थे, आगे भी रहेंगे। यानी इसको हम एग्जाम में करें, आप एग्जाम से पहले भी थे, एग्जाम से बाद भी रहो। बहुत अच्छा करा तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा नहीं भी करा तब भी रहोगे, जीवन फिर भी चलेगा, अपॉर्चुनिटीज फिर भी मिलेंगी। तो गीता का जो फिलॉसफी है, मैं समझता हूं स्ट्रेस को बस्ट करने में, और मैंने खुद देखा है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो उसको स्वीकार करते हैं, मैंने उनको दिया है गीता पढ़ने को एग्जाम से पहले, जिनको जरूरत थी, या जो जिस धर्म के हैं उसके हिसाब से कहा भाई तुम कुरान शरीफ पढ़ो, तुम बाइबल पढ़ो, तुम गुरु ग्रंथ साहब पढ़ो, जैसा जिसका है। तो मैंने देखा उसका निश्चित फर्क पड़ता है, 100% फर्क पड़ता है। एंजाइटी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। याद कीजिए एपीजे कलाम साहब को, उनसे बड़ा साइंटिस्ट तो कोई हुआ नहीं हाल फिलहाल में, उनसे बड़ा स्टेट्समैन नहीं हुआ, एंड he was a very spiritual man. He used to read all the great scriptures of the world, including Bhagavad Gita. He used to quote from Upanishads. And आपको जान के आश्चर्य होगा कि some of the greatest scientists and scientists like Albert Einstein, Max Planck, David Bohm, Nobel laureates, they were all great admirers of Bhagavad Gita because they found it very scientific and very rational. So get the larger picture, don't just focus के एग्जाम, do or die कुछ नहीं होता है।
इसलिए ये कुछ बातें, क्योंकि बहुत कुछ तो बोल ही चुके हैं लोग, मैंने थोड़ा सा स्पिरिचुअल एंगल पर फोकस किया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बुद्ध भगवान विराजमान है, अपने शिष्यों के साथ प्रवचन कर रहे हैं। तो ये जो कामिंग इमेजेस हैं, अपने कमरे में कुछ ऐसी इमेजेस रखिए जो आपके धर्म के हिसाब से, कुछ ऐसा, कोई ऐसी इमेज रखिए, कुछ ऐसे पिक्चर रखिए, है ना, कुछ ऐसी चीज रखिए जिसको देख के आपको शांति मिले, को याद आ जाए कि एग्जाम ये फाइनल फ्रंटर नहीं है, दिस इज नॉट द। मैं तो और आगे के कहता हूं, इवन जो कैंसर पेशेंट्स कभी कभी मेरे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं, मैं उन तक को ये कहता हूं कि कैंसर इज नॉट द फर्स्ट एंड लास्ट, लाइफ गोज ऑन। आपका अगर ये डिजीज है तो दिस इज नॉट द लास्ट थिंग, जीवन उसके बाद भी है, पहले भी था, यू कैन गेट ओवर दिस। तो जब कैंसर के पेशेंट समझ जाते हैं कई लोग, तो एग्जाम में क्यों नहीं समझ सकते हम? तो हमें लार्जर पिक्चर देखनी है, उस सत्ता से, उस चेतना से जुड़ना है, जिस रूप में भी आप मानते हो आपके धर्म के हिसाब से, और उसके एनर्जी लेते हुए, उससे प्रेरणा लेते हुए अपने काम को करना है। तो मैं समझता हूं अर्चना जी, मैंने शायद टाइम अपना कुछ ज्यादा ही कर दिया लग रहा है, मैं समझता हूँ टाइम तो हो गया है। नहीं सर, बहुत अच्छा है। नहीं सर, ठीक है, टाइम तो। Thanks, sir, for such a nice, valuable, knowledgeable, wonderful summing up of today's topic and presentation. Cake's beauty depends upon its icing. Today's cake icing is really wonderful, sir. Thank you, sir. Thank you. Congratulations to you for organizing so well. Thank you, sir. In the end, I would like to thank our speakers and audiences. Wish you a good day. Jai.